हम बिलोंग करते हैं लारकाना से। माय गॉड, आई मीन यू नो सो कंजर्वेटिव। वी ग्रू अप लिसनिंग टू इट। हम घर आके बताते भी नहीं थे कि हमें ये इनवाइट किया गया है। उन्होंने जब वो अपॉइंटमेंट लेटर रखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था मंथली पे 7500। मैं इतनी खुश। बहुत सारे लोग खवातीन को हायर करना प्रेफर नहीं करते। यू नो आई हायर्ड पीपल, आई ट्रेन्ड दीज फीमेल्स एंड उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरी शादी हो रही है एंड मैं छोड़ रही हूँ। एंड आई विल बी लाइक एक्सक्यूज मी, डोंट टेक वर्क एज अ स्टेपिंग स्टोन कि मैं अभी फ्री हूँ तो मैं कर लूँ। If there are lack of opportunities, then the competition goes up. A lot of energy goes into कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा है या हमारे पास ये नहीं Complaining. है। अगर कोई नई ब्रीफ आती है, there are a lot of people जिनका मतलब लिटरली जब मैं उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है, क्या बुरी खबर मैं ले आई हूँ। काम ज्यादा आ जाएगा, काम ज्यादा होगा, हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मैं काम ज्यादा करना पड़ेगा तो फिर क्या, यू नो अगर आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा आपको तो जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? मुझे जरूरत है अपनी वॉइस, मुझे जरूरत है अपनी स्टैंडिंग, मुझे जरूरत है कि दैट पीपल नो दैट आई एम केपेबल ऑफ दिस। इवन आई वांट टू अंडरस्टैंड मेरी वीकनेसेस क्या है। तो मुझे जरूरत है इन चीजों की। मुझे लगता है तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि भाई मुझे गुस्सा आता है तो मेरी टीम काम कर लेगी, कोई मुझे ट्रिगर नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो चीज है तो वो उसे रिस्पॉन्ड कर रही है। Nobody can trigger you actually. This is only within you. फिर अगर आप में है ना तो आप बहुत छोटी छोटी बातों में बड़ी जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे। I have learned empathy with time. You know, I have learned empathy. I have learned the fact that you know everybody has their own journey, and I need to respect from where they are coming from. कोई दिन मैं किसी चीज से गुजर रही होंगी और कोई दिन कोई और किसी चीज से गुजर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, महक, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। How have you been? I am great. Thank you so much for giving us your time. Anytime. And welcome to the Hustle Stories. I hope today we spend some really good time and share some really great stories of yours जो मैंने सुनी है, off camera भी सुनी है, but we'd like to discuss it further. So take us through your journey from the beginning very quickly. Okay, so there are multiple stuff. ठीक है, अब जहाँ तक मैं अब यहाँ पहुँची हूँ एंड समटाइम्स आई रिफ्लेक्ट तो ऐड नहीं करता, यू नो बहुत सारी चीज़ें। सो आई एम द सेकंड इन माय सिबलिंग। वी आर 4 सिस्टर्स ऑल टुगेदर एंड हम बिलोंग करते हैं लारकाना से। ठीक है, एंड वेरी ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ एंड बैकग्राउंड, बिकॉज वहाँ का मोडस ऑपरेंडी बहुत डिफरेंट होता है and everything revolves around some traditional or some you chasing something और एक मतलब आपको कोड दे दिया जाता है कि भाई यही है। My mother was somebody who just took a very huge stand कि भाई पढ़ाना ज़रूर है और बेस्ट पढ़ाना है। Your mother belonged to Karachi? She was from Karachi, okay. Yes. She was was an Urdu speaking and somehow I just feel that she just knew कि being girls सबसे बड़ी चीज़ जो मैं दे सकती हूँ वो यही दे सकती हूँ कि इनको आई जस्ट नीड टू इन्वेस्ट इनकी एजुकेशन में, रेस्ट ये खुद ही अपना वे पेव कर लेंगी। एंड उस पर कभी कभी शुरू में मुझे ये भी होता था, वी वर स्टडिंग इन सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल एंड ज़ाहिर है वहाँ का आई मीन इट वाज स्टिल बेटर स्कूल एट दैट टाइम। कॉन्वेंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन वो तब भी हमारे ट्रेडिशन से बहुत डिफरेंट था। तो वो इतना हमें उस टाइम पे गुस्सा भी आता था और ये भी होता था कि भाई किसी के यहाँ पार्टी हो रही है आप अलाउड नहीं, किसी ने ये गेट टुगेदर किया आप अलाउड नहीं है, आफ्टर स्कूल आप इनसे बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ इन 3 फ्रेंड्स के साथ उनके घर जा सकते थे, इनको अम्मी जानते हैं। सो आई वाज लाइक तो इतना हमारे लिए ऑड किया क्यों, आप हमें कहीं और कर देते ठीक है ताकि हम जरा सुकून से रहे। फिर आसपास सराउंडिंग में जब ऐसे लोग हों जो आउटगोइंग हो, हाँ, एंड देन यू नो यू वुड हियर अबाउट कि ओह माय गॉड लाइक यू आर नॉट इनटू इट एंड ये द ट्रेंड्स पे है ही नहीं, ओह माय गॉड आई मीन यू नो सो कंजर्वेटिव एंड यू आई मीन वी ग्रू अप लिसनिंग टू इट एंड हम घर आके बताते भी नहीं थे कि हमें ये इनवाइट किया गया है, बस आपस में एक दूसरे से बैठ के हम कर लेते थे। बट यू नो नाउ आई अंडरस्टैंड कि सबकी जर्नी ना डिफरेंट होती है। यू कांट टेक अवे फ्रॉम वेयर यू आर बॉर्न, ठीक है, आप उस चीज़ को टेक अवे नहीं कर सकते, यू कांट गेट इट आउट ऑफ यू का डिटैच नहीं आप हो सकते कभी भी। अब जो है वो यही है, बट नाउ आई नो कि उसकी सिग्निफिकेंस अब इतनी ज़्यादा थी, बट द बिगेस्ट सैक्रिफाइसेस दैट हैड टू बी you know to be given were by my mother and then later you know with everyone else together. तो अगर मैं break की बात करूँ कि how I got into this, तो like I've told you earlier also कि I did my O levels and O levels के बाद जो subjects मैंने A levels में choose किए थे वो उस वक्त किसी स्कूल में नहीं offer हो रहे थे, तो I appeared as a private candidate। तो अब जाहिर है मैं घर में थी
and a friend's sister was getting married who was teaching at a private school. अच्छा. तो उसने मुझे कहा कि महक यार तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, मेरी बहन की वो कोई As a वो हो teacher, रही है हाँ. एज अ टीचर एंड वो 2 वीक्स ठीक है. के लिए तुम प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है और तुम मतलब प्लीज ठीक कर है. दो सब्स्टिट्यूट. एंड Okay. स्कूल में ज़ाहिर है वो ए लेवल्स भी था, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स उस ए लेवल्स बिल्डिंग में पढ़ रहे थे और मैं इस बिल्डिंग में पढ़ा रही थी. बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि मैं क्लास में जब पढ़ाती थी तो सामने से मुझे वेव करते थे और मैं भी फिर उन्हें वेव करती थी. And So- how much was your first paycheck? सो आई स्टार्टेड, तो मैं आपको बता दूं कि आई वाज 17 बिकॉज ज़ाहिर है उस टाइम पे आप ए लेवल्स कर रहे होते, तो मेरी जब वो पे चेक मेरे सामने आया और उन्होंने जब वो अपॉइंटमेंट लेटर रखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था मंथली पे 7500. मैं इतनी खुश उस 7500 में मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था कि मैं ये भी ले सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरे पास ये भी होगा, मेरे पास वो भी होगा, एंड 7500. बट आई एम टेलिंग यू वो 7500 वो मेरे दिमाग में अभी भी नहीं भूलता कि उसकी वैल्यू मेरे लिए कितनी ज़्यादा थी. एंड उसी वक्त मुझे अपना सिग्नेचर बनाना पड़ा क्योंकि मैं उससे पहले तो साइन करती नहीं थी. एंड आज तक मेरा वही सिग्नेचर है विच इज़ आई मीन कोई भी देखता है वो कहता है मैं ये सिग्नेचर मतलब ऑफ ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो मैंने इतनी जल्दी उसी वक्त बनाया था. And this is how I started, and from there then I had a friend and he approached me, and he was the one who opened the first digital agency of Pakistan, which was a full service agency, and he was at that time collecting people कि आप आए और बिकॉज स्किल पूल अपना ही डेवलप करना था. डिजिटल मार्केटिंग उस वक्त कहीं पढ़ाई नहीं जा रही थी, जो लर्निंग करके लोग आ रहे थे वो प्रैक्टिकली ही सीख रहे होंगे. बिल्कुल, और वो अनलर्न करना बहुत मुश्किल था. सो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू. तो जो मैंने सीखा है सारा वो मैंने वहीं सीखा है, एंड आई हैव लर्नड what is transformation, what is how to approach, हाँ अपनी थिंकिंग को कैसे डिफरेंट करना है कि दुनिया को देखने का एक अलग तरीका भी हो सकता है. सो दैट वाज आवर इंस्टीट्यूट, मैंने वहाँ से सीखा था. उसके बाद देन आई वेंट टू ग्रुप एम. मैंने फिर वहाँ मतलब आप ये सोचे कि उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर लिया था कि उन्होंने मुझे ग्रुप एम ने मुझे हायर किया. और फिर मैं इस्लामाबाद गई कुछ टाइम के लिए, फिर हेड ऑफिस में कराची मूव किया मैंने. नो आई वाजंट एंड वो भी एक स्ट्रगल, मतलब वो आप नहीं सोच सकते कि वो क्या स्ट्रगल थी. 4 महीने बात नहीं कर रहे आपसे कि व्हाई डिड यू डू दिस एंड व्हाटएवर. बट देन देखिए मैंने ना अपने आप को शुरू से, जब मुझे वो फर्स्ट जॉब मिली थी ना, तो जो घर में सीन होना था वो फर्स्ट जॉब पे ही हो गया था. Because yeah, even that was something कि how could you without even like asking, and my mother was a little I didn't do anything, she just did it herself. So I was always somebody who would always do it and then tell because मुझे पता था कि ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, घर से नहीं निकालेंगे मुझे. I just knew that they will not kick me out, and that's how I have always been. घर के सारे लोग एक तरफ और मेरा दिमाग एक तरफ एंड एवरीथिंग. एंड लिटरली आई वुड हियर माई मदर कि भाई अगर कोई लड़कियों को हॉस्टल है तो इसे वहाँ भेजते हैं क्योंकि ये मुझे बहुत तंग करती है. बट आई जस्ट फील आई कैन सो मच रिलेट टू इट. माय मदर इज लाइक मेरा जितना भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना वो इसकी वजह से. माय मदर वुड ऑलवेज से दैट टू जितनी मी. भी शुगर बढ़ती है ना वो इसकी वजह से बढ़ती. सो अब बट द थिंग इज दैट आई थिंक एट अ वेरी यंग एज आई फिगर्ड आउट कि आई एम लाइक दिस. Then you got married and you told me that you were working until the last day. Yeah, I was yes throughout my when I was expecting I was working till the last day and everything, and that because my attention would always be कि आप कोई भी responsibility आप ले रहे हैं ना आप उसे fully करें. अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप उसे छोड़ दें, because अगर आप इधर भी नहीं होंगे और उधर भी नहीं होंगे तो then you will be the most frustrated person ever. I did take a break after my daughter Dania was born for like 4 months, 5 months, and उसके बाद मैंने जहाँ भी अप्लाई किया मैंने कहा I need flexibility. I was very straight with what I wanted. I need flexibility. I'll work with you if there is flexibility, and that's about it. And by the time this इतनी is reputation actually हो so गई much थी मेरी. underappreciated, I would say, because I recently a few months back I heard a story. I actually heard this with my friend because she was pregnant. हम बहुत time बाद बात कर हाँ. because we actually used to study together in Yeah. university, and Yeah. then she got married and I'm busy with my own work. तो शी वॉज प्रेगनेंट. आई डिडंट नो कि उसने लास्ट डे तक टिल द मोमेंट शी वॉज प्रेगनेंट वो जॉब कर रही थी. एंड बाय द टाइम शी वेंट होम और रात में उसकी तबीयत ख़राब हुई. द नेक्स्ट डे शी डिलीवर्ड अ बेबी. एंड even
if your 9th month is there, आपको पता है कि अभी नवा महीना शुरू हो गया, then ultimately you would take a break यार 15 दिन So पहले. I think कि इसको जो है ना, and this is my own journey and I mean, don't I want to appreciate generalize it, her so but much. ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? It's not a disease, it's a condition. Listen to your body. If you're able to, go about it. If you're not able to, go about it. Listen to your body. Be aware क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. जहाँ पे आपकी attention जाएगी ना, वो energy वहाँ grow करेगी. अगर आप अपने आप को कहेंगे ना, मैं बीमार, मुझे ये हो रहा है, अब ये होने वाला है, या ये मुझे इतना ज़्यादा, वो वहीं के वहीं grow कर जाएगा. अगर आप उससे थोड़ी सी attention अपनी divert करेंगे and we have a positive outlook and everything, दुनिया जहान में बच्चे पैदा होते हैं, you know, like it's something that has been given to women. आप इतनी strong हैं कि you can do all of that, right? So just that believability will take you to a lot of places. I just knew that this is how I am. मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं सकती. This is a favor and an honor and a respect that I'm giving to my own self. And by the time that people saw this, I think they understood that she can't let go of it. We need to work something around her to have her operate in our system. ओके, सो ये आ गई आप ओमनीकॉम तक. वी टॉक्ट अबाउट योर जर्नी. अब इसमें काफ़ी सारे सवाल हैं मेरे. सबसे पहली चीज़ ये कि आई वुड लाइक टू आस्क दिस कि अभी आई वाज वाचिंग फ्यू वीडियोस एज वेल, हायरिंग अ वुमन, बिकॉज हम उन्हीं चैलेंजेस को कंटिन्यू करते हुए बात कर रहे हैं, बिकॉज यू आर द वन हु मैं दोबारा ये बात बोलूँगी, यू मेड थिंग्स वर्क आउट. ठीक है, और इट केम टू यू. ठीक है, हर किसी के लिए नहीं होता. हाँ, बिल्कुल ठीक है. यार, तो इस वजह से ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग ख़वातीन को हायर करना प्रेफर नहीं करते. ठीक है, मैंने खुद मतलब कुछ अपने बॉसेस से ये बात भी सुनी एंड दे वर लाइक कि यार महम, बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनको हम प्रेफर करते हैं हायरिंग के लिए. पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता था, क्योंकि ख़वातीन आर अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, तो आपको बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है. एट टाइम्स वो बहुत डिपेंडेंट हो जाती हैं. हाँ, बिल्कुल सही है. तो ये एक मसला रहता है. बट ऑल्सो फिर मैंने अभी रिसेंटली हम जुनैद अकरम की भी एक वीडियो आई है जिसमें वो यही बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को हायर करना इज़ अ बिग चैलेंज. अब कन्वेंस की बात ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट्स आल्सो अ टीडियस टास्क. तो अब आप करीम कर रहे हैं, बाइक बहुत कम लड़कियां चला रही हैं, आप करीम ओवर कर रहे हैं. मोबिलिटी इज समथिंग दैट we all need to encourage. कन्वेंस वाला ऑप्शन एंड देन अदर ऑप्शंस, घर के सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, and all और of that. फिर वर्किंग लॉन्ग टर्म. सो वो उसमें उन्होंने कहा कन्वेंस के साथ साथ एक और बड़ा मसला ये है कि ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाती, बहुत जल्दी छोड़ भी देती हैं जॉब वगैरह. लाइक साल 2 साल काम करके ज़्यादा ख़वातीन कंटिन्यू नहीं करती. तो हमें जो है ना ऐसे लोग चाहिए. जुनैद अकरम की वीडियो के अलावा भी मैं बात कर रही हूँ, 3-4 ऐसे मैंने कई केसेस देखे. सो व्हाट डू यू थिंक, आपके अच्छा ओमनीकॉम आर यू लाइक हैविंग, हाउ, व्हाट इज द परसेंटेज बाय द वे ऑफ there are many females there are many females there. In fact, the organizations were very heavily headed by a woman, so I don't know if people would like it or whatever. Women do hire women, yes, but yes. men do not hire women. And I'll tell you one thing. So let's just be realistic about it. Sure. I read up a lot, like जो social trends है या groups में बातें हो रही हैं, सब females को उनकी priority क्या है? शादी हो जाए हमारी. सही है. जब आपकी priority यही है और ज़िंदगी का ultimate goal यही है कि मेरी शादी हो जाए, तो फिर आप job को क्या priority देंगी? Do you understand? So you need to first, like, I'm not going to, अगर मेरे पास I'm leading a team, अगर मेरे पास 3 example ऐसे हों कि as soon as I hired people, I trained these females, and उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरी शादी हो रही है and मैं छोड़ रही हूँ, then I'll be like, excuse me, do you understand what I'm saying? So we need to take it both ways. You need to align yourself first. Don't take work as a stepping stone कि मैं अभी free हूँ तो मैं कर लूँ. Stop taking things as a job. Try thinking career. Try thinking your own personality. Try thinking that this is what I'm giving to myself. लेकिन अगर मतलब a lot of them would go about it, अभी मेरे पास कुछ करने को नहीं है तो मैं जॉब कर रही हूँ और जब शादी हो जाएगी तो मैं छोड़ दूँगी. तो ये तो the priority of majority females that I see on groups, उसमें ये होता है कि बस मेरी शादी हो जाए किसी तरीके से. तो फिर वो जब वो साल भर भी जो काम कर रही होती है ना, उसमें अपना 100% नहीं दे रही होती है. मतलब for me, I'm sure there's and I've worked with such great minds, Maham, I tell you, and at times I was like, उनके घर वाले कहेंगे कि ये जो है ना, ये बहुत इनको brain wash करती है, whatever, because when you see someone, it's very exciting कि you have so much of potential, and then you're coming and telling me कि जी मेरी 1 महीने में शादी हो जाए, मैं काम नहीं कर सकती, and I'm like, but do you know that you're capable of all this, and you're putting all of that aside
because the ultimate goal is to just get married, you know. So it is both True, ways. very true, It shouldn't yeah. be everything and everyone should be performance driven. Somebody who's working, at times I have had conversations, you know, if there are people of the same designation, so they're everything that you're giving it to them should be the same. You should not differ because she's a woman and she's not heading the house or something, or he's a man because he's heading the house, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी. ज़रूरत सबको है. आप उस काम का रिटर्न दें, जो भी वो आपको काम दे रहा है, आप उसका सिनेरियो इज़ डिफरेंट, यू नो, एंड थिंग्स हैव चेंज नाउ इन अ लॉट ऑफ वेज. थिंग्स हैव चेंज. येस, इट्स अ सैड सिचुएशन कि मोबिलिटी इज स्टिल, जहाँ पे दुनिया के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. हम अभी, एक फ़ीमेल जो है, मैं 4 मिनट्स के डिफरेंस पे रहती हूँ अपने ऑफिस से. मैं आज तक पैदल नहीं गई हूँ, ठीक है, क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि मैं पैदल चली जाऊँ तो मुझे छोड़ने वाले भी बहुत आएंगे और फिर वापस लेने वाले भी बहुत आएंगे. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. एंड ऑफ कोर्स you need to understand few things. ये मैं करना भी चाहूँ, लेकिन I need to take care of people कि, you know, if people at home would go, they would not be comfortable, right? So मुझे उनको भी सोचना है, and कहीं कहीं वो गलत भी नहीं है इस बात को लेकर कि, you know, कि भाई आप जो, you need to understand the environment that you are in, and it is what it is. But again, the thing is that कि अगर आपके पास सब चीज़ें ये हैं, उसमें भी you are making a mark, तो अपनी भी तो कोई स्ट्रगल होगी ना. हर चीज़ इतनी आसानी से कहीं पे भी नहीं मिलती है. आपके पास आउटर इश्यूज़ हैं या आउटर बैरियर्स हैं, इनर बैरियर्स हैं, जितने भी हैं, यू नीड टू टेक इट ऑल टुगेदर. जैसे उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन, पूरी रात ही मैंने उसके ऊपर काम किया. तो सुबह उठ के किसी ने मुझे कहा था, तो तुम अपनी मर्ज़ी से कर रही हो, तो ऐसा क्या मतलब इसमें था. सो यू नो, लाइक दैट रूम टू इवन कंप्लेन एंड वाइन एंड इवन से कि ओ माय गॉड आई एम सो टायर्ड, इतना कम हो जाता है वो फॉर अ फीमेल. बिकॉज तुमने चूज़ किया है करने के लिए, तो फिर कहने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, यू नो. सो दैट दीज आर द थिंग्स, देन यू टेक इट इन एंड यू से या फाइन, I think from someone's angle that would be correct because I chose it, so I have to give it that way. That's actually very beautiful and true. It's very true because highly relatable as well. Yeah. Another question is the current ongoing situation you are seeing. Yes. You know that inflation is rising, Of and course. जैसे हमने बात की convince में भी issue आ जाता है बिल्कुल. ख़वातीन को and all that. बिल्कुल. तो उस situation में भी still जो you know opportunities हैं वो तो नीचे जा ही रही हैं. But I don't see that much you know potential or energy. मेरे आसपास तो मैंने नहीं देखा कि अगर यार you know if there are lack of opportunities then the competition goes up. Yeah. You know, so what do you think is today missing in the teams? Okay, so I work with multiple age groups. Some I work together, some work in my team, and these are, some are very young people, some are very young in their mindsets and everything. What I feel is, I just feel that, you know, when situations are of that sort, nations have gone through it, you know, people go through these tough times and everything. At that time, you need to bring out your best. If you're not going to bring out your best at that time, and very strategically speaking, if the organization feels that, you know, I'm not getting the best of this person, that means मेरी dependability उस पे खत्म हो गई ना. That means कि वो easily replaceable है. So once that happens, you can't really go about and saying कि मेरे साथ ये हो गया. I still feel that, you know, a lot of energy goes into कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा है या हमारे पास ये नहीं Complaining. है, या rather than कि मेरे पास जो है मैं उसको कैसे fuel in कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. So I still feel that at a passion level, you know, you need to go back into yourself and you need to go about it. Why am I doing this job? Yes, there is a lot of sad situation that I understand कि a lot of people would answer कि भाई मुझे bills pay करने हैं, इसलिए मैं ये job कर रहा हूँ या कर रही हूँ. अगर आप ये बात establish हो गई ना, ये fact है, तो अगर आप कर रहे हैं and this is what it is, then do it with your complete heart. Do it with your complete dedication. मतलब भले वो आपको काम पसंद नहीं है, आपका पैशन नहीं जो है, आप अपने, एक तो सबसे पहले ना लेबल करना छोड़ दें. जब हम कहते हैं ना काम, उसी वक्त अगर कोई नई ब्रीफ आती है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका मतलब लिटरली जब मैं उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है, क्या बुरी खबर मैं ले आई हूँ, ठीक है. सो आई एम दैट पर्सन हु ब्रिंग्स, यू नो, सो यू नो, तो मैं उनसे कहती हूँ इसमें क्या हो गया है कि मतलब, यू नो, इसका मतलब काम ज़्यादा आ जाएगा, काम ज़्यादा होगा तो हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो फिर क्या, यू नो, अगर आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, यू नो, देन
this is what it is. And see, dependability, as a team we all depend on each other. A lot of people say dependability अच्छी चीज़ नहीं. I think dependability से अच्छी चीज़ कोई और हो नहीं सकती है. The bonds that you create when you're actually dependent at each other, this is how teams grow. So what I just feel कि you need to be aligned with yourself. I think people are not aligned with themselves. उनको करना क्या है? भाई उसने कहा है तो मैं ये कर रहा हूँ. कमाना है लेकिन मेहनत नहीं करनी. नहीं कर क्यों? मतलब so I would never understand that. क्यों? Like of course and females को तो ये भी बहुत सुनने को मिलता है और मुझे तो मतलब इतना सुनने को मिला है. आपको तो जरूरत नहीं है. मतलब किसकी जरूरत नहीं है? मतलब so once that you have you're settled and everything, तो आपको तो जरूरत नहीं. किस चीज़ की जरूरत नहीं है? मुझे जरूरत है अपनी वॉइस की. मुझे जरूरत है अपनी स्टैंडिंग की. मुझे जरूरत है कि that people know that I am capable of this. और even I want to understand मेरी weaknesses क्या है. ठीक है? So मुझे जरूरत है इन चीज़ों की. So also, being independent or at times financially independent. I think all women should just think about being financially independent. And I'm not saying कि इसका ये मतलब है कि आप अपना जो घर का एक निज़ाम है उसे छोड़ दें. It is for you. ठीक है? It gives you a lot of other powers, decision making. People, world looks at you very differently. Like you were saying ना कि मुझे allowance और उस चीज़ की बात तो बाद जब उन्होंने देख लिया कि भाई this is how she is, so we need to make certain changes because she's not getting back at it or whatever, and she has it in her. So that's the thing that we as people and especially as women, you need to give yourself that independence. आप छोटा ही कोई काम करें लेकिन करें ज़रूर, चाहे उससे आपको कम आ रहा हो या जो भी है, but it is yours. Give that to yourself. The power of decision making is just so important. आप you are you. Only then when you're able to make decisions. And you are able to make decisions when you're financially independent. बिल्कुल. And दूसरी चीज़ ये कि that's why I tell people कि यार मतलब is this the best of you are giving me? And a lot of time it is not the best because मैं तो काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा है. So I was having a meeting the other day with somebody and मैंने clearly उनको बोला, मैंने कहा देखिए मैं जो है ना I don't work for anybody. I don't work to do this for somebody. I do it for myself. अब वो मेरा काम हो या मैं किसी organization के अंडर हूँ, my thrive, my dedication, my passion is going to be the same because मैं एक हूँ ना, मैं ऐसे मोल्ड नहीं उसको change कर सकती. So I will give that 100% to wherever I am. Then I would ask another question of at times when you are brutally ambitious, so you tend to compromise on your mental well-being somehow. Somehow you do intentionally or unintentionally. So what would you comment on? So you're so right, and honestly speaking, sometimes ऐसा टाइम भी आता है ऑफिस के अंदर जो मैं कभी किसी को कह रही हूँ कि आज 2 दिन तक मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर इसमें कुछ डाल देगा. ठीक है? Because when you're leading teams and you're like gearing up and you're the one who's getting everything and you're making them wake up, work. When you are too much ambitious, you become less empathetic. So that could be true. That could definitely be true, and I'm not going to deny it. And I have learned it with time. I have learned empathy with time, and I still learn a lot. I'm just telling you that I've learned it. If you meet some people who have worked with me earlier, I can understand. और वो ऑफिस के फ्लोर पे भी बोलते हैं कि आपकी वजह से रिजाइन करके गए होंगे. हाँ बहुत दफा ये तो मतलब बहुत ही रीजन ये है महक. Okay. And a lot of times, when people say कि महक तो आपने तो पहली वाली महक के साथ काम ही नहीं किया, ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी ये है. अच्छा, और खवातीन बॉसेस वैसे भी बहुत बदनाम है इस केस में. I don't know. I think expectation नहीं है उनसे ये expectation नहीं है कि वो इतनी. Yeah, maybe male bosses are a little more lenient comparatively. Probably we are actually used to taking more instructions from men than from females. So we already auto-tune ourselves कि आदमी अगर हमें instruction दे रहा है तो वो तो उसको इसीलिए ही है वो. Yes, order दे सकती है. वो do you understand? So that's learning for everybody as well. So at a performance-driven environment it doesn't matter. So I feel कि वो एक बहुत चीज़ है. But actually बड़े मज़े की बात आपने बोली क्योंकि सिर्फ ऑफिसेस में नहीं होता है, हर जगह ही. I've worked so many freelancers. I would really appreciate Adil sitting right here. मैं उनको बोलती भी हूँ कि Adil, I'm only working with you because you are just so जो behavior matters a lot for me. तो बहुत सारे freelancers के साथ मैंने काम भी किया है and they are just not ready to accept the fact कि ये मुझे कैसे बता रही है.
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बॉसी है या मैं बॉसी हूँ, वी वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल वर सो यू नो narrow minded I would say, कि they were not ready to accept the fact कि ये मुझे नहीं बता सकती, मैं बताऊंगा कि कैसे चलना। हाँ बिल्कुल सही है। and this is just so annoying कि यार काम अच्छा करना है, आप बता दो या मैं बता दूं, जो काम अच्छा कर सकता है ना हाँ वो कर ले। End of the day that result or that work that you're doing it should be you know state of the art, and उसको करने के लिए everybody needs to you know fuel in and everybody needs to like you know work and it out. when you have males in your team or subordinates then it is a little bit difficult हो जाता है, वो हो जाता है toxic हो जाता है वो, मतलब you know it just depends कि आप how you're thinking, but I think I'm telling you myself, I have learned empathy with time, you know, I have learned empathy, I have learned the fact that you know everybody has their own journey and I need to respect from where they are coming from, you know. We unite here, you know, and everything, but end of the day we are all humans and we must, कोई दिन मैं किसी चीज़ से गुजर रही होंगी और कोई दिन कोई और किसी चीज़ से गुजर रहा होगा. So I have created that openness and like you're talking about mental you know health and wellness. So I took up meditation 4 years ago. अच्छा. And that has really helped me. But उससे पहले मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ कि there is something that is not aligned. You know, sometimes मैं अपने काम को भी question करती थी कि मैं इतना ज़्यादा काम क्यों कर रही हूँ. So what is it? Is it lack of validation? Is it the fact कि मैं किसी और बड़ी चीज़ से distract हो रही हूँ? ठीक है. Is it the fact कि मैं इस pattern में हूँ तो मैं इस pattern के इतने used to हूँ कि I don't want to get out of it or whatever. So मुझे but something was not working. You know, something was not aligning. So once that I got onto the meditation journey, which is the journey of the self, you know, so एक अपने बारे में sit with the self, sit with and own everything, own your hurt, own your pain, own you know all the things that have happened. How do all you the do trauma. it, by the way? I'm very curious. So I work with this person. His name is Tahir. ठीक है, I worked with him and it's been 4 years and that's my safe space. He has actually you know created and have really connected me with my authentic space and everything. It is not easy. It is difficult and it's not उसका कोई process नहीं है कि आपने इस तरीके से बैठना है या आपने इस तरीके से करना है या whatever. All you need to do is just keep your attention to yourself, जो हम कभी नहीं करते. शुरू में जब meditation class होती थी तो मैं सीधी नहीं बैठ सकती थी. अच्छा, मेडिटेशन की अपनी क्लासेस? हाँ, फिर मैं ऐसे करती थी, फिर मैं कभी हाथ ऐसे करती थी. अगर आप ऐसे बैठ रहे हो तो नहीं तो you I mean what I figured out कि मैं इतनी irritated हूँ कि मैं सीधी भी नहीं बैठ सकती. मतलब you know, do you understand? So if somebody so how will I sit with myself जब मैं सीधी, मुझे आता ही नहीं है कि मैं सीधी बैठूँ and सुकून से बैठूँ and without so much movement बैठूँ. So I even learned कि how you need to give yourself space and how you need to go little deeper. So maybe when you are ambitious you're actually restless. ठीक है, तो you are so active. मेरे टीचर मुझे बोलते थे, अभी मैं रिसेंटली डिप्लोमा किया ना IBS से, तो डॉक्टर अख्तर से बेटा आप अम्मी से जाके पूछिएगा, आप ना सोते वक्त भी पैर चला रही होती हो. हाँ बिल्कुल, तो I understand that. You know, so we become so restless कि फिर हम हाथ पाँव चला रहे हैं, अगर हमें सुकून से बैठने को बोला भी गया है ना. Exactly. हालांकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एम्बिशियस हैं तो आप रेस्टलेस हों. अगर आप एम्बिशियस हैं तो सबसे ज़्यादा ग्राउंडिंग की तो आपको ज़रूरत है. You know what is it? But this is like what I'm saying. I saw it that it was how missing. did you know how things work So out? what I learned, and मैं बहुत brief आपको करके बताऊंगी because again it's ये मतलब it's a long lifelong journey. It is not that कि ये 4 classes ली और उसके बाद done हो गया and everything and all of that. Okay. So there are sessions that goes on and all, and then you learn how to be more aware of your own self. Okay. So in times that I started owning a lot of my trauma, I started owning a lot of my hurt, I started owning a lot of my pain, I started accepting कि मेरे साथ ये 4 चीज़ें बुरी हुई हैं और ये 4 चीज़ें अच्छी भी हुई हैं. ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. सही है, बिकॉज हम कंडीशनड हैं. मुझे बहुत बाद में जाके और अभी भी आई एम डिस्कवरिंग हु आई रियली एम, बिकॉज मेरे लिए तो एक रूल्स हैं एंड आप कंडीशन कर दिए गए हैं कि भाई मेरे लिए जो मतलब एक जो मैं सुनती थी हमेशा, महक उसे बहुत गुस्सा आता है. तो मुझे लगता था वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि भाई मुझे गुस्सा आता है तो मेरी टीम काम कर लेगी. ठीक है, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा है काम करो, क्योंकि मेरे को गुस्सा आता है. और अगर महक ने ये दिया तो या अगर सही नहीं किया तो फिर डांट पड़ेगी.
तो मैं को गुस्सा आता था, तो आई यूज्ड टू फील लाइक गुस्सा तो मेरी हाँ। दुनिया, मुझे जब डर लगता था तो मुझे गुस्सा आता था, मैं डर नहीं दिखाती थी अपना, just because of the fact that people would think she's so weak or whatever. So मेरे हर चीज़ का रिस्पॉन्स जो पहला होता था वो गुस्सा होता था, and that was my biggest strength. Just think about it. You used to think. Yeah, and अगर इतनी कोई नेगेटिव चीज़ जो कि रिलीजियसली भी इतनी मना की गई है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो आप पहले ये सोचेंगे आप अपने साथ क्या कर रहे हैं. Do you get it? So I had to learn this a lot. I still learn. अगर मैं उस पैटर्न पे वापस जा रही होती हूँ, मुझे ये पता होता है कि अब मैं उस पैटर्न में चली गई हूँ. So it's easier to come back. So I have learned it. Self-awareness. That's self-awareness. First is self-awareness and then is self-acceptance. Yes, acceptance of everything, even the things that you have done. And मैं label नहीं कर रही हूँ, लेकिन because of general public, even the things that you feel that you were not proud of, और जो चीज़ें आपने जानबूझ के गलत की और जो चीज़ें आपने नहीं जानबूझ के गलत की हैं. Acceptance of everything. तो अगर डर लग रहा है तो बोलना है कि हाँ मुझे डर लग रहा है, and accepting every other weakness of yours. Exactly, कि I'm scared, and इसकी इतनी कोई एक एपिसोड आई क्योंकि मैं किसी हॉरर मूवी से ना डरती नहीं थी. अच्छा. And I used to be like बेकार हैं तो बिला वजह की and whatever and everything, but when I started accepting it and I went about कि मुझे भी, so एक मैंने कोई हॉरर मूवी देखी और उस रात में सोई and everything, मैं 4 दिन नहीं सो सकी क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था. I had people on the call कि भाई तुम कॉल पे रहो और मैं सो रही हूँ, अगर तुम वहाँ से गए या गई. And they were like, what's going on with you? And when I spoke to Tahir, and he said कि this is a movement, महक, ये movement है आपके अंदर, इसे accept करें, ठीक है? It's softening something. Confident enough. मुझे तो कभी डर ही नहीं लगता. नहीं, after that you were confident enough to accept that. हाँ, मैंने इसको accept किया कि मुझे डर लग सकता है, and it is fine. डर लग सकता है and आप उसे accept करें. हाँ, लगना चाहिए डर, अगर आप एक normal feeling वाले इंसान हैं, आपको डर लगना चाहिए. And how did you control your anger then? So I figured it out कि ये anger is my defense mechanism. Also the fact कि वो बहुत और जगहों से आ रहा था वो anger within me only. कोई मुझे trigger नहीं कर सकता. मेरे अंदर वो चीज़ है तो वो उसे respond कर रही है, ठीक है. So I figured that out. Yeah, this is just so true, Mehak. I mean, I love this statement. I mean, कितनी अच्छी बात बोली है आपने. Nobody can trigger you actually. This is only within you. Yes. तो आप फिर अगर आप में है ना तो आप बहुत छोटी-छोटी बातों पे बड़े जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे. ट्रिगर हो जाए. एंड दूसरी चीज़ देखें, This is so easy to trigger. एंड अगर वो ट्रिगर क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ शायद सेफ नहीं फील कर रही, या मैं इनसिक्योर हूँ, या मैं अपनी कोई वीकनेस छुपाने के लिए गुस्सा दिखा रही हूँ या ट्रिगर हो रही हूँ, या दूसरे को ये अगर मैं आपसे इफ़ आई एम इन एन ऑल्टरकेशन विद यू, आपसे पहले मेरे बीच में, मेरे और आपके बीच में हम पहले खुद हैं. I'm just talking to myself. I'm trying to show it to myself first. How beautiful. So that I figured out with meditation. That's why I would definitely encourage. And this is relatable to the fact जो भी आपने बोला insecurities. Yeah. There are certain insecurities. Yes, सबके साथ होती है ना. वजह से ही you become that way. Yeah. फिर चाहे वो गुस्सा हो या वो कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है वो, and everything. And then when जब आप इतना garner करते हैं अपने अंदर इतने गुस्से को and everything, then आप function नहीं कर सकते बहुत दफा. And when you're insecure, you never accept yourself या अपनी weaknesses. And when once you become secure, you accept your all those weaknesses, तो वो आपकी insecurities चली जाती हैं. And then you become very vocal about them also. Yes. ठीक है, जब आपने दुनिया को बता दिया तो अब किस बात का डर है? खुद ही बोल दिया तो और क्या क्रिटिसाइज करेगा या sarcasm थ्रो करेगा जब आपने खुद ही बता दिया कि हाँ मेरा ये मसला है. So I have had these conversations with my teammates and everything. अभी recently मैं किसी से बात कर रही थी and I was like the thing is that aggression or whatever, it needs to be channeled in the right direction. जितना मैंने अपने अंदर उसको जगह दी है and all that, it has not served me really well. So just try to figure out कि ये आ कहाँ से रहा है और ये आपको serve कैसे कर रहा है. So it has really helped myself first, then also has helped me to run a big team as well, to take care of the professional responsibilities that I have, to take care of the personal responsibilities that I have, to understand कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर एक lack है या बहुत सारी lacks हैं,
मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ था कि आई एम नॉट गुड इनफ, एंड उस आई एम नॉट गुड इनफ को रेक्टिफाई करने के लिए मैं पता नहीं क्या क्या करती थी और कि बहुत किसी को ज़्यादा ये आप नजर काम, ना आ जाए. हाँ हाँ, तो मैं वापस उस पॉइंट पे जाऊंगी जब आप कह रही थी कि आई यूज्ड टू वर्क एक्स्ट्रा Yeah. एंड यू नो यू Yeah. बिकम रेस्टलेस, तो जब ये आप सॉर्ट करते हैं यू स्टार्ट टेकिंग ब्रेक्स, यू नो You start taking break and you like कि हो जाएगा, and वो हो जाता है. I'm telling you the progression that I joined the company as a manager and I'm the general manager now. ठीक है? माशाल्लाह. So within the past 3-4 years, everything what I gave, the energy that I gave, I received it back. You know, so it's a reflection. We human beings are what? Energy beings, and try to just, you know, reflect each other's Always, energies. always, it's You the know, case always. so This मेरे is लिए just वो so बहुत work relatable. है. That's why I would encourage everyone, whatever sort of, you know, mental health works for you, be it yoga है, be it going to somebody and talking about it, Or just even just taking breaks. taking breaks That and eventually everything. So works, yeah. just be aligned with that. And I would say not just for people who are working, people who are in any field. उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लिए वो इन चीज़ों को समझें एंड यू गो अबाउट इट, बिकॉज हमारी सोसाइटी इज़ लाइक लोग क्या कहेंगे टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एवरीथिंग जो हमारी डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है लोग क्या कहेंगे. वो बात हमेशा ही कहेंगे. You know, सही Mehak, है? you and your story is just so relatable that I would like to interview you for next 3 hours. But since we would sit For the other sure. time Anytime, off Maham. camera, Anytime. and I would love to sit with Great. you. But while closing the interview, Yeah. I would like to ask you if you want to send some message to the viewers closing the interview. Okay. So I would definitely like everyone um, to be very self-aware of themselves. ठीक है? I know things around हमेशा सेम नहीं रहती हैं. उनको लेबल ना करें. अपने जब आप किसी भी एक्सपीरियंस को लेबल कर देंगे ना, आप वही एनर्जी उसको फीड करेंगे. वो कहेंगे बुरा है, तो फिर आप उस पर बुरी ही फीलिंग्स डालते रहेंगे. प्लीज़ गेट टू द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ. आप जब जहाँ जिस जगह पे एट अ वर्क प्लेस जब आप वहाँ एंटर हो जाते हैं ना, इसका मतलब है कि आप उनके राइट्स, उन्होंने जो इन्वायरमेंट या उन्होंने जो आपके लिए लेआउट किया, आप उससे कमिट करते हैं. अगर आप उससे कमिट नहीं कर सकते, द मिनट यू रियलाइज, आप वहाँ से चले जाएं. ठीक है? बट व्हेन यू आर इन इट, यू गिव योर 100%. Through work, through teamwork, you are opening this entire gateway of learning for your own self. इस चीज़ को ऑनर करें. आपको कभी कोई मसला ही नहीं. आपको ये आएगा नहीं, इसने मुझे ये कह दिया और उसने मुझे गलत किया, इसने मुझे यार तो फलाना मोस्टली वो किया. निपटा रहे होते हैं ना, अच्छा आ गया अब तो निपटाना ही है, तो आप ये उस that is टास्क excellence. लिस्ट को देखिए. एंड समटाइम्स मतलब यू नो, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट, नीचे कमेंट्स भी आ रहे होंगे कि भाई टू हार्श, बट भाई जो आप काम कर रहे हैं उसकी तो पे मिल रही है ना आपको. यू गेटिंग पेड फॉर इट. रोजी तो हलाल करो. सही है. When you're going to do extra, when you're going to show that value side of me, then I'm going to give you something extra, right? So I don't, but for me, it has always been like that. Any person's, you know, somebody who's achieved a lot, जिसकी भी आप बायोग्राफी पढ़ेंगे या जिसकी आप उसमें हमेशा that struggle, that hard work is key. ठीक है? जब तक आप नहीं देंगे तो फिर आप एक जॉब कर रहे हैं, आप किसी मिशन में नहीं हैं, आप किसी करियर उसमें नहीं है, आप फिर उसी पे चेक तक महदूद रहेंगे. There's no goal. There is no goal. So please align with yourself. Understand what it is that makes you, that you know, to come out of, you know, the best of you. So just chase that a little. You will do a favor to yourself, and वही चीज़ फिर आगे reflect होगी. तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि you know, all of us need to take our own responsibility. अपनी responsibility लें. Excellence was the actually Yes, and title be, of your I'm not saying कि compete किसी और के साथ compete करें, अपने previous version के साथ ही compete कर लें. So just that's just the start for me, and that's how I have So worked beautiful. it out. This was such a beautiful message, and I hope people would have liked, and I hope it was worthy, and I'm very honored that you know, called me and everything. I And you loved the yourself and your conversation. team, everybody is doing such a great job. Thank you. And that's amazing, and I really, really appreciate such spaces. Thank you. Yeah. Thank you. And I honestly loved the conversation. These are kind of conversations. मेरे पास कोई paper नहीं है, मैंने कोई questions नहीं लिखे हुए, and it was just so you know, honest conversation that I literally forgotten between that we have cameras. So if you've liked the conversation, please do subscribe and let us know if you like the hustle story of Mehak. Thank you so much for being here. Thank you so much, Maham. Thank you so much. Thank you.